रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हूँ सर और मेरा मतलब इंटरेस्ट था नेटवर्किंग की फील्ड में, कंप्यूटर नेटवर्किंग की फील्ड में। तो सर फाइनल ईयर में भी मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया और आगे मैं परस्यू करना चाहता हूँ हायर लेवल पे। लेकिन सर मेरी मतलब वही आपने एक बात वो की कि पब्लिकेशन मतलब मैं अगर आगे किसी मैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर पता नहीं मेरी कब पब्लिकेशन कब हो या ना हो, लेकिन मैं परस्यू करना चाहता हूँ फॉर अ स्कॉलरशिप या किसी फेलोशिप के लिए। तो सर मैं कैसे किसी प्रोफ़ेसर को जो है क्या कहते हैं मैं अप्रोच करूँ अगर मेरे पास इस तरह थ्रू अगर मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है कि मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है और मैं अप्रोच करना चाहता हूँ टू वर्क विद हिम तो सर काइंडली थोड़ा गाइड कर दें इस बारे में। जी। जी, अगर देखें आप बीएस कर रहे हैं और बीएस आपने फाइनलाइज़ कर लिया है। बीएस कर रहे हैं आप? यस सर, बीएस फाइनलाइज़ कर लिया सर। जी, तो उसमें बीएस आपका हो गया तो आप इस चीज़ में ना पड़ें कि आपके पास कोई पब्लिकेशन हो या अगर पब्लिकेशन नहीं है तो आप रीच आउट ना करें। आप सबसे पहले कंट्रीज़ आइडेंटिफ़ाई करें कि किन कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं यूएस जाना चाहता हूँ, कनाडा जाना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और यूके और फ्रांस और जर्मनी, ये कंट्रीज़ आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिए। अब इन कंट्रीज़ के अंदर आप आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन-सी टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने उस कंट्रीज़ की आ जाएँगी। फिर आप अपना टाइम के अंदर से डेडिकेटेड होके एक कंट्री को स्पेसिफ़िक होके टाइम लगाएँ। लेट्स से आप कहें कि यार मैं 1 हफ़्ता एक कंट्री को दूँगा। आपने कहा मैं यूके में 1 हफ़्ता दूँगा। यूके की टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकालें। फिर हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनके जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है और नेटवर्किंग की जो फ़ील्ड है, उसके आप पेजेज़ निकालें और वहाँ से आप प्रोफ़ेसर्स आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन-कौन से वो प्रोफ़ेसर्स हैं जो कि नेटवर्किंग के डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। जब आप ये लिस्ट बना लेंगे, यही काम आप तमाम कंट्रीज़ के साथ करेंगे। उसके बाद आपने ये नहीं करना कि एक यूनिवर्सिटी में अगर 5 प्रोफ़ेसर्स हैं और वो नेटवर्किंग की फ़ील्ड पे हैं, तो पाँचों के पाँचों को आप ईमेल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि वो हर एक आपस में उनकी इंटरेक्शन होती है। तो उनमें से सबसे जो बेहतरीन जो आपको लगे, जो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करता हो, आप उसको निकालें। सबसे पहले आप उसके प्रोफ़ाइल का मुताला करें कि देखें कि वो कहाँ पब्लिश करता है, कौन-कौन से टॉपिक्स पे काम कर रहा है और फिर आप 1 पेज का या 2 पेज का एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ। 1 पेज का या 2 पेज का रिसर्च रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ और देखें कि वो किस टॉपिक पे काम कर रहा है और उस टॉपिक के हिसाब से जो आपका भी इंटरेस्ट हो, आप वो प्रपोज़ल बना के उसको सिंपल सी ईमेल करें कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ पीएचडी करने के लिए और ये मैंने प्रपोज़ल बनाया है और वो प्रपोज़ल अगर आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसके अंदर लिटरेचर रिव्यू भी किया हुआ है 1 पेज का और 3 से 4 रिसर्च क्वेश्चंस को आइडेंटिफ़ाई भी किया हुआ है। तो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा कि जो कि आपके सुपरवाइज़र जो प्रोस्पेक्टिव जो प्रोफ़ेसर है, उसकी अटेंशन को ग्रैब करेगा। तो ये एक तरीका है और इसमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें आपको किसी रिसर्च पेपर को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपने एक प्रपोज़ल 2 पेजेज़ का बनाना है और उसको शेयर करना है और छोटी-सी ईमेल हो आपके सीवी के साथ कि मैंने बैचलर्स किया हुआ है, मेरी इतनी सीजीपीए है और मैं इंटरेस्टेड हूँ पीएचडी करने के लिए। अगर आपके पास फंडिंग हो, तो आप मुझे बताएँ कि मैंने प्रपोज़ल लिखा हो। इस तरीके से आप उसको रीच आउट करेंगे और होपफुली इस तरीके से फिर आपको रिप्लाई मिल जाएँगे। थैंक यू वेरी मच सर। जी। बाल दाने देखें खुशबू और जायका चलती रही। Usma, if you have question, you can go ahead. अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। I am from the field of like electrical and computer engineering और मेरा जो FYP था it was based on cyber security penetration testing of Wi-Fi based networks. तो मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं मास्टर्स करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या जर्मनी है या जितनी भी यूजुअली स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं, वो रिसर्च बैकग्राउंड को प्रेफर करती हैं और आगे रिसर्च को ही मतलब वो सीख करती हैं उन लोगों को जो रिसर्च करना चाहते हैं। तो अब मुझे ये नहीं समझ आती, मैंने 1-2 स्कॉलरशिप्स में अप्लाई भी किया है बट आई वेंट टू द स्टेज ऑफ इंटरव्यू, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली देयर वर मोर कैंडिडेट्स। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि लेकिन पाकिस्तान में किस तरह अपना रिसर्च बैकग्राउंड बनाऊं, अपनी प्रोफाइल बनाऊं, मैं ऐसा क्या करूं, व्हाट शुड बी माय स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर सिक्योरिटी। जी, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। खुद आयरलैंड के अंदर भी
बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपने मेन काम ये करना है कि आपने एक प्रपोज़ल बनाना है 2 पेज का, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो। और ये प्रपोज़ल, अगर ये 2 पेज का प्रपोज़ल आपका अच्छा बना है, रिसर्च प्रपोज़ल, तो ये आपका सेलिंग पॉइंट होगा। यानी आपकी मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट की इतनी अच्छी सीजीपीए नहीं आई अंडर ग्रेजुएट के अंदर, और कोई रिसर्च पब्लिकेशन भी नहीं है, और अगर वो उसके बाद थोड़ा टाइम लगा के 2 महीने 3 महीने लगा के एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल लिख लेता है, और वो सिर्फ 2 पेजेस का रिसर्च प्रपोजल वो शेयर करता है, तो वो तमाम लोगों को यानी सुपरसीड कर जाएगा, और उसका प्रोफाइल बिल्कुल ही विजिबल हो जाएगा उन लोगों के सामने, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि शो कर सके कि जो रिसर्च करना चाहता है, और रिसर्च करने को करने को जो चाहता है ना, चाहत को वो इवेलुएट करेंगे उसके 2 पेज रिसर्च प्रपोजल से। तो ये एक पॉइंट होगा। खुद जब मैं अंडर ग्रेजुएट कर रहा था, तो इंजीनियरिंग करने के बाद, उसके बाद मैंने एक यूएस की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाओ, और उनकी मुझे एडवाइस याद है, मैंने उस पर 3 से 4 महीने लगाए और रिसर्च प्रपोजल एक बनाया। उसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किए रिसर्च क्वेश्चन अपने टॉपिक से मुतालिक उस वक्त। तो आप भी साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कोई भी पेन टेस्टिंग हो गई या कोई भी नया टॉपिक हो गया जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और थोड़ा सा आपने पढ़ा हो, उससे मुतालिक आप एक प्रपोजल बनाएं और फिर आप वो फ्लोट करें, तो उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगी। सर हमारा जो प्रपोजल है वो हमारे प्रोफेसर के जो रिसर्च टॉपिक्स हैं उनसे मिलता जुलता होना चाहिए, या जो हमने अपनी फील्ड परस्यू की हुई है उससे होना चाहिए? जी, अगर आपने खुद अपना एक फील्ड चूज़ की हुई है, तो फिर आपने ऐसे प्रोफेसर ढूंढने हैं जो कि उस फील्ड पे काम करते हों। ठीक है, आप इस तरीके से तो बहुत कम आपको प्रोफेसर मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़े स्कोप को ब्रॉड करें। आप कहें कि मैं साइबर सिक्योरिटी पे ही काम करती हूँ, और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप पहले एक मिसाल के तौर पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपने ले ली, उस पे आप एक प्रपोजल बना लें 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। तो प्रपोजल बनाना एक आर्ट है। फिर उसके बाद आप देखें कि अभी इस वक्त कोई नई स्कॉलरशिप आई हुई है, लेट्स से यूके के अंदर साइबर सिक्योरिटी पे आई हुई है, जैसे मालवेयर डिटेक्शन पे आई हुई है, तो आप क्या करें, या फ्रॉड एनोमली डिटेक्शन पे आई हुई है, तो आप एक हफ्ता लगा के उस टॉपिक को थोड़ा सा स्टडी करें और अपने उस पर अपना रिसर्च प्रपोजल बना लें, और फिर वो वाला प्रपोजल आप उनको भेजें। तो इस तरीके से आपकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो अपने आप को अपने टॉपिक तक कन्फाइन ना करें जब तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती। और पीएचडी का टॉपिक तो बहुत स्पेसिफिक होगा, मास्टर्स का थोड़ा ब्रॉड होता है, मगर अपने आप को स्पेसिफिक ना करें किसी एक टॉपिक के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, जो आप बोल रहे थे कि अपना डोमेन एक्सपर्ट फाइंड करें, कि अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी भी जर्नल को देखने के पब्लिकेशन कौन सी अच्छी है, तो डोमेन एक्सपर्ट जहाँ पे पब्लिश करते हैं उसके लिहाज से हम फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन एक्सपर्ट को कैसे फाइंड करते हैं? कि अगर फॉर एग्जांपल मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, अभी आई हूँ, अब मैं कैसे डोमेन एक्सपर्ट को फाइंड करूँ? जी, देखें, डोमेन एक्सपर्ट को फाइंड करने का तरीका ये होगा कि आप मुझे अपना टॉपिक बताएं, कोई जनरल, लेट्स से कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी टॉपिक हो अपना। कंट्रोल थ्योरी। कंट्रोल थ्योरी। तो अब आपने देखना है कि कंट्रोल थ्योरी के अंदर कौन कौन से बड़े रेप्यूटेड जर्नल्स हैं। ठीक है, उसमें मिसाल के तौर पे आपको पता चला कि IEEE ट्रांजैक्शन ऑन कंट्रोल सिस्टम्स एक जर्नल है, ये टॉप रैंक जर्नल है, या कोई और अच्छा जर्नल है, तो आप उस जर्नल में जाएं और देखें कि कौन कौन से पेपर्स रिसेंटली पब्लिश हुए हैं। फिर वहाँ पे ऑथर्स होंगे, उन ऑथर्स के प्रोफाइल को जाके चेक करें। तो आपको कुछ ऑथर मिलेंगे जो कि जिन्होंने ये पेपर लिखा होगा, जो पीएचडी के दौरान लिखा होगा, या पोस्ट डॉक के दौरान लिखा होगा, या जूनियर रिसर्चर के दौरान, कैरियर के दौरान लिखा होगा। तो उनमें से आप सीनियर लोगों को ढूंढें। जब आप सीनियर लोगों को ढूंढेंगे तो आप उसके ज़रिए से किसी एक प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। लेट से कनाडा की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक प्रोफेसर है जो कि कंट्रोल थ्योरी पे काम कर रहे हैं, आपने उनका प्रोफाइल ले लिया, नोट कर लिया। अब आप उनके प्रोफाइल को स्टडी करें कि इनकी जो मेजॉरिटी पब्लिकेशंस हैं वो कहाँ पे हैं। आपको पता चला कि इन्होंने 10 पब्लिकेशंस IEEE ट्रांजैक्शन ऑन कंट्रोल थ्योरी में की हैं, ठीक है, और 5 पब्लिकेशन एक दूसरे अच्छे जर्नल में की। इसी तरीके से आप और 2-4 लोगों के प्रोफाइल को निकालें। फिर जब आपके पास ये 3-4 लोग प्रोफाइल आ जाएंगे, तो फिर आप ये चेक करें कि ये 3-4 लोग कंट्रोल थ्योरी में आपके टॉपिक पे ही काम कर रहे हैं। अब ये कहाँ कहाँ पब्लिश कर रहे हैं, और इनमें जो सबसे अच्छी जगह पे पब्लिश कर रहा होगा वो डेफिनेटली वो एक अच्छा सुपरवाइजर होगा, एक अच्छा प्रोफेसर होगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे अपने डोमेन एक्सपर्ट को। ये तो मैनुअल तरीका हो गया, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फील्ड में फर्दर काम करेंगे और अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर पढ़ेंगे,
तो आपको पता चलता चला जाएगा कि कौन-कौन से लोग हैं जो कि अच्छी पब्लिकेशंस कर रहे हैं। और तो उस तरीके से भी आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, मगर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके हैं। Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for being here. Uh, थैंक यू। that's just it. Any concluding remarks? अगर आप कुछ देना चाहें. Just thank you very much for inviting me. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for being here, for giving your time, for being so supportive. हमेशा available रहने के लिए, हमारी invite करने पे आ जाने के लिए बहुत thank you sir. We are so grateful. Now we have another guest speaker, Bozimor Munir Bozimor. She is an amazing illustrator. She is an amazing story creator. She have done her bachelor's in. She have done her MFA from Columbia University, USA, in creative writing. Apart from that, she has been a lecturer in Penn University. And she have been a lecturer. She is currently a lecturer in Geneva College. So thank you, ma'am, for being here. We've done a webinar with her regarding multicultural teamwork as well. So thank you, ma'am, for being here. I think ma'am are having some issues. Ma'am, are you here? I think Manere, you are not audible. No, we can still not hear you. No, we cannot hear you. It's okay. I think Maybe we can move to our next speaker. Sarvasik, are you here? Yes, Assalamu alaikum. Can everyone hear me? Walaikum assalam. Is that fine? If you can go first, because Ma'am Munir is having some problem. Yeah, sure, no problems. I can Okay. take over. So first of all, thank you for being here. He is an amazing software engineer. He have worked 15 years in Nokia. That is quite a long time. He worked in R&D, 5G. We have done a webinar with him as well related to 5G. He have studied in NUST University, one of the most reputable university in Pakistan. Apart from that, he has also done an MBA from Warwick Business School. So that's also an accomplishment. Thank you, sir, for being here. Over to you. Yes, thank you for having me. It's a pleasure. I will share a presentation which मैंने prepared की थी for this call. Please let me know when it's visible. Okay. Yeah, it's visible. Okay, thank you. Dr. Mubashir ने बड़ी सा introduction दिए to this talk, and I really enjoyed listening to him. I'm not a PhD. I'm not a doctor. Far from it. Hardcore engineer or problem solving, basically being my domain, so to say. So when I was asked to prepare for this, I thought, well, let me share my perspective. So R&D, correlation and causality. तो मेरे लिए इस टॉक का आज की टॉक का मेरा जो मकसद था वो ये था कि as all budding researchers, थोड़ा सा आपका डायमेंशन ब्राइट जरा इसको व्यू को थोड़ा सा जरा एक्सपैंड किया जाए on the possibilities you have. So picking up where Dr. Mubashir left off, let me just continue that strand. So for me, research is a very important aspect. Yeah, it's a very important activity of life in general. So it helps you understand के current view क्या है, current perspective क्या है इस वक्त, whatever your industry might be. So what's currently going on? And then from that, you learn from that view. So you kind of pick up on things. You might not have an interest. अभी आपको develop नहीं हुआ, you're early in your education, your studies. So you're maybe confused. And reading such or doing such type of research, looking through different views,
it helps you to pick up on a few things and actually start learning on it. So बहुत बड़ा domains है, so it helps you focus. And lastly, it tests you to realize where you are. तो आपने studies की होती हैं, एक certain आपका background होता है, but then when you study this more and more, you realize कि आप कितने पानी में, or how much effort you need to still do to improve where you are. Or मेरे लिए personally, research is basically kind of, what is research? Yeah, where do I apply my research? So there is this educational aspect, वो तो है ही है, academics being part of it. But then for me, there are other research avenues जिनको आप pursue कर सकते हैं, not just in your educational or professional capacity, but in self-discovery as well. And I think self-discovery should never stop. So research for me is a very broad subject, and doing it right helps you establish this road path जो आप ले सकते हैं. So you could start at one place and end at a completely different place based on your research, basically what you have learned and how you've applied it. So education को पहले ले लेते हैं, and I won't spend too much time. As I said, my preceding presenter, Dr. Mubashir, did a really great job explaining this, but just for completion's sake, आपका academic research है, so your field of interest जो आपने खुद से select की या आपको कहा गया इस पे research करने को, वो आपने किया. Then you even do elective selections, master's programs में या PhD programs में, या in certain courses like the one you've taken now, you kind of decide कि yeah, this is my interest area, this is what I want to go into, and this is what I want to do research in. So for me, this is usually a long-term kind of research. So this is not something जो आप एक दफा करके छोड़ देते हैं. You constantly then, as part of your education, you are now in a position to build on top of that. तो आपने कंप्यूटर साइंस से शुरू किया इन जनरल, फिर आपने किसी एक फील्ड को पकड़ा कंप्यूटर साइंस में, फिर आप उसके अंदर गए, फिर उसकी एक niche में गए, and so on, and you kind of, in an educational perspective, are developing yourselves. And it's good to do this knowingly, consciously, किसी और को देख कर नहीं, अपने आप को डिस्कवर करके. But then maybe थोड़ा सा मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा on the other aspect, professional development. और professional development में मैं industrial research की तरफ जा रहा हूँ. So what does that imply? So this is where I'm deviating a little bit from the previous discussion. So industry itself, big companies, and you probably know about this, obviously उनके भी अपने research interests होते हैं. And those interests are dependent on the kind of business that company is in. So Google's and Facebook's, and for that matter, Nokia. So just to add, 15 years, 20 years हो गए, so 2 decades. I've been with Nokia and Siemens and so on in R&D. So बहुत से avenues निकलते हैं जो कि industry के अंदर already हैं, जिसके अंदर they want people to do research with them on. And eventually that leads to patents, IPRs होते हैं, and the company owns the IPRs, but you are, fundamental in achieving such a result. So in case आपको अपने academic direction में कुछ ना clear हो रहा हो, या you are feeling कि you maybe need to get some experience in the field and then go back into academics, something that I'm interested in doing at some later stage, inshallah. So it helps you to be with a company जो कि आपकी aspirations, या on a business element, like for example, आपको cloud computing में interest है, and go for companies जो cloud computing में research करें, who are cutting edge, who are doing things which is not just services and maintenance, but rather they are investing in development and designing and research and such things. And there are many companies that are doing this. And this is where trends matter. आज से 10 साल पहले में भी AI का hype चली थी, फिर वो थोड़ी सी die out हुई, simply because the industry was not able to adapt to the usage. So he is having some connectivity issues. Let's wait for a while. He will be joining. Can you guys hear me now? Oh, sorry, yes, I think you can. Yeah, you got disconnected. Can you share that again? You can continue from where you left.
अच्छा so कितना मेरा content आपने जब बात करी कि हमें वो यूनिवर्सिटीज मतलब वो कंपनीज चूज करनी चाहिए जो रिसर्च को भी केटर करें, दैट पार्ट वाज अंडरस्टैंडेबल। right अच्छा चले thank you so I'll get a move on but I think I hope कि मैं आपको थोड़ा सा ये convey कर सका with this कि you do have the company's perspective और जिस डायरेक्शन में वो जाना चाह रही हैं आप उस पर लैच ऑन कर जाएं, आप उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर लें, which helps the company develop you in your field and in a mutual interest में, then you both continue. And sometimes I know many people जिन्होंने they did PhDs, industrial PhDs, so the company sponsored them in the PhD program. Naturally उसमें company का interest था, but of course if that connects with your interest, that's really good. And then जो second type of research है जिसकी वजह से मैंने MBA किया था was this managerial research and operational research या processes के अंदर. So then you realize कि अच्छा company में अगर आप job कर रहे हैं तो then company has other problems. It's not just your academic field, but it's also the managerial field. And sometimes आपका experience from the engineering sector kind of helps you understand the technical problems, but then also with the experience you understand the managerial problems. And sometimes it's a good combination कि आप उसके बाद अपना research interest जो है वो managerial side पर ले जाएं. And then there are plenty of avenues in that area. The third type of research which I would personally recommend everyone to do is this SWOT analysis kind of research to discover kare. So and the same principles to find your mentors, find your coaches, just now find people who are relevant in your, get their help, understand yourself, ask questions, engage yourself, because all the time आप अपने आप को ढूंढ रहे हैं. So where do you exist in all of this? और उसमें goal setting is very critical. So as long as आप अपने आप को you keep pushing yourself after your goals, तो उसमें मेरे सामने so it's basically it's a path of a believer. Yeah, so जो belief जो है रखना, कुछ यहाँ पे कुरान की आयतें भी रखती हैं just to kind of motivate you कि it's really a passion जो आपको drive कर रहा होता है. If you become stagnated because you feel you've done enough at whatever age you might be, I don't think you should keep researching. You should keep discovering yourself. You don't know what comes around the corner. And the worst thing is कि आप 10 साल बाद realize करो कि आपको 5 साल पहले कुछ और कर लेना चाहिए था. You were just not cognizant of it. You were just not thinking about it कि I need to keep discovering. So don't lose heart in that sense कि negative चीज़ें आती हैं. Just keep going with it. So research itself, ये आपका एक practice है जो अगर आपने इस course में सीखा है, try to apply it in all these facets and just keep evolving in that sense. So eventually you'll achieve wisdom from all this knowledge that you'll be acquiring. You'll just be able to know these things. हो सकता है आपको 20 साल बाद समझना है कि मुझे कैसे पता है, but you would be there. But you have to keep researching. You have to keep doing it. So for me, this is one of those continuous and automatic actions which you just have to keep applying to yourself. So just to give a little bit now, moving a little bit towards where do we go with the research. So this PDCA, what is it? PDCA is a plan, do, check, act. But it's a very simple model in इसके explanations मिल जाएंगी and whatnot. But I like this model simply because of it's a simple. बहुत और मैं recommend करूँगा कि keep this in mind अपने हर काम में, अपने हर research में, keep this in mind. You always have to plan what you're going to do. If you don't plan it, you don't know where you're heading. Don't take somebody else's plan. Don't think like somebody else is thinking. You should prepare your own plan, your own research, your own interest area. And once you do that, of course, you have to execute it. You have to do it. So this is the hard part. Planning बहुत से लोग कर लेते हैं और वो नेपोलियन की बड़ी famous saying है कि things never go to plan, but you always have to plan. So it's just one of those things. But doing it, of course, teaches you where you could have done things differently. आपका check आ जाता है, आपके conclusions आ जाते हैं. You get to know कि यार मैं ठीक कर रहा था, गलत कर रहा था. Maybe आपने कोई research topic लिया, you went ahead, you contacted a few professors, you got some feedback, and you realized, this is not for me. Sometimes ये बड़ा heartbreaking हो जाता है. You spend some time on the area, and then you realize कि ये तो I'm not finding interest in it.
The best part is from that is to pick out what should you be doing next. Is it a new type of research? आपको बिल्कुल domain change करना अपना, but why? Yeah, and to do that you have to again plan. So you have to realize that this action has to happen, but now what do I do? बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए. I think बंदा disorient हो जाता है. But in a certain capacity, you should do this. And the earlier you do this is better because you have time on your hands to do the rectification, to act and plan again. So अब आप imagine करें कि ये cycle now it starts to repeat a bit more continuously. अब ये personally for me, this is my own experience. So I've done this cycle over 2-3 years period. I would consciously ask myself, मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, मेरे results क्या है, मैंने जो सीखा था वो सीख लिया है, अगर मैंने सीख लिया है, आप simple example देता हूँ, मैं C++ अपने एक time पे अपने आप को कहा था early in my career कि I'm going to be a guru of C++. So I like did anything I could. I read articles, I read journals, I went to competitions, hackathons. That was my do part. Yeah, let's do it. And from the check, I realized, is this something I want to do? And after 2 years, I realized, well, I've done enough in this. I could keep doing it, but I feel now it's time for me to move to the next step, right? So you're kind of moving in this circle, but you're building on top of what you've already learned. And अगर आप ये consciously करोगे, तो आप realize करोगे कि you're building like a pyramid. So you're moving from the base, जो कि आपकी wide base होती है. It's a lot of fundamentals, and then you build on top. And then you get a bit more focus, a bit more niche की तरफ चले जाते हैं, and so on and so on. But you need to keep a plan in place so that you don't deviate too far away and do something जो आपकी strength ना हो. जो मैंने SWOT की बात की थी शुरू में. Personally, I would recommend always work on your strength first because that is your natural given talent. उसमें आप strength पे develop करोगे, you will stand out. और weakness को आपने rectify करना है, आपने उसकी तरह cover करना है उसको. You can't have strength in everything. It's just humanly impossible. So kind of develop in that. But if you do it in this kind of iterative manner, जो यहाँ मैं left पे लिख रहा हूँ, the more iterations you run of this research, the more you will develop a concept. Now here's where the development part comes. आप research करते करते, you can't keep doing research which is completely theoretical because then there's no application. And sometimes that is what people like to do, and this is perfectly justified. There are other people doing development, perfectly fine. But sometimes, and this is my personal experience, मैं research में शुरू में आया था Nokia में, and I realized I want to application. या मैंने एक चीज़ पे इतनी research की है, मैंने इसको चलाना है, अब मैंने इसको industry में लेकर जाना है, मैंने इसकी product development करनी है and what not. It kind of urges you कि मैं इतनी मेहनत एक चीज़ को develop करने पे की है, I want to see it in action. So this is that moment जहाँ पे you might switch. You might say, okay, now I'm going to go to a product development. I want to do and marketing of that thing, or whatever it might be. I want to get out of that. But you're building on top. You're consciously making that decision. So मेरा इसमें fundamentally ये है कि diligent रहे, hungry रहे, but also conscious रहे. So research is not going anywhere, then pivot. Think about management, marketing. This is the way you should keep, SWOT, work on your strengths and stay realistic. So time is the most important entity in all of this. You don't want to do things जिसकी demand नहीं होगी बाद में, आप खुद disheart हो जाएंगे, मैंने इतनी मेहनत की, हुआ ही कुछ नहीं उसका, and so on. अपने goals clear रखें, which I mentioned before. If you're going after money, there's a certain path to take. If you're going after education, research, there's a certain path to take. If there's कोई और आपका incentive है, you want to go abroad, you want to settle abroad, it's a different type of incentive. In goals को clear कर लें अपने पास. You don't need to share that with anyone, but that should be your area of interest जिसको आप basically pursue कर रहे हैं. And it could be कि at some point आप realize करें यार तो मैंने ठीक नहीं किया, मतलब I should have done something different. But as long as you consciously were doing it, you would know what you did wrong, let's say, or what you could have done differently. And that is again learning. That makes you wiser for the next time. And that's what I would promote. So coming to a close, research to development, it's a state change. ठीक है, आप एक certain time में research करते करते एकदम development की तरफ चले जाते हैं. This is basically realization of your research. So keep that in mind. You want to get results. So what is the nature of your results you want to get? It could be progress in a certain area, development. Tangible हो तो अच्छा है, something that you can, like papers की बात हो रही थी, but अगर आप industry में जाते हैं, that's usually a product, something endorsed by the company, an IPR, something that you want to attain. Even it could be something like a endorsement, कि आपको कोई, you get something out of it, a grant or something. IPRs आपके निकल सकते हैं, things like that. So steady state जो है ना, वो
realize करें मैं एक state A में हूँ मैंने state B में जाना है and I need to make that jump. So what do I need to do that? So उसकी realization अपने दिमाग में रखेंगे so that research will automatically kind of you'll know what kind of research you need to do. Baki, there are many professionals in the field who can help you get there, like coaches and mentors and so on. But you need to know yourself. ये steady states हैं क्या मेरी A to B, or what would make me get from there to one state to the other. So closing, left hand side equals right hand side. Favorite equation हमारी from FSC years, basically meaning to say कि development जो है it has a correlation to research, and there is causality on that research. So आपकी relationship causal है. It will depend on what kind of research you did and how you carried out that research, on what topics you did that research. Appropriate development आपकी उसी basis पे होगी. So जितना आप उसमें जितना मीठा होगा उतना आपको मजा आएगा उसका. So you need to work on those aspects. But again, iteration is very important. एक research खत्म होती है, एक development में जाती है, फिर आप you start the research to develop the developed research. So it's the best part of life. You keep discovering yourself. So with that, I would close off. Congratulations to all the graduates of the course, and best of luck for the future. So if there are any questions or any thoughts or anything you would like me to extend on, please let me know. Thank you so much, Vase. There's a question I wanted to ask you. Thought you said about कि companies भी research करती हैं, right? कि companies के भी specific areas होते हैं, जैसे cloud में कर रही हैं और Google में कर रहा है. So how do we find that कि companies कहाँ पे research कर रही हैं, या फिर हम उस source तक कैसे पहुँचें कि for example मेरे एरिया में कौन सी कंपनी रिसर्च कर रही है, मैं जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ उसको कौन सी कंपनी इसमें रिसर्च करना चाहती है या चांसेस हैं उसके करने के. Right. It's very similar to what Dr. Mubashir was saying. Like, now you need to apply it to the companies. आपके पास seniors होते हैं, alumni होती है आपकी. I think the alumni is the first contact because they know what you studied, what your interests are. और उसी तरह का आपको एक cover letter लिखना होता है. Personally, this is what I request people who contact me. Give me a small writing. What would you like to do? What have you already done? Why would you think that this is the right thing for you? Why is it the right fit? और उसमें फिर होता यही है कि then once you read such a thing, normally before you write such a thing, you don't, मतलब somebody wouldn't just come to me and say यार मैंने Nokia में काम करना है. Okay, fine, but what? Like Nokia is like a huge company. It's doing everything from optics development to radio development to whatnot. तो अगर research oriented जाएंगे ना तो मेरी यही suggestion होगी कि first find the industry you're interested in working in. You said cloud, for example. There are plenty of cloud companies. Maybe I would even make it more specific. Cloud ki bhi, there's orchestration services, there's front end, dashboards and whatnot. You're using the data जो cloud generate कर रहा है. Then there's the network element itself. Then there are Nokia जिस तरह काम कर रहा है, Nokia में 5G पे cloud पे काम हो रहा है. So अगर 5G cloud is your interest area, so you'll have to kind of isolate these companies and read about the companies, try to understand what they're working on. उनकी open talks होती हैं, उनकी capital talks होती हैं, where they share what they're working on. Listen to them, go to them. Or once you kind of get a connection with some company, like I like what they're doing, you've read something on it, आपने Google Trends में डाला हुआ है, you've seen what this company is working on, उनका research, उनकी websites attend करें, उनकी जाके like read up upon them. And then you can start to look in LinkedIn, you can start to look into resources जो कि आपको connect कर सकती हैं with such topics. I really like interest, and I have an interest in this area. मैंने पढ़ा इसके बारे में, and you find either an alumni or you find somebody in LinkedIn. Yeah, you find through some networking event somebody. There is no golden rule to this. I mean, it's like very similar to what Dr. Mubashir was saying. कि आपको थोड़ा सा, you have to prepare yourself to find the right contact, the right person, and then you have to find. But you have to do this job. Yeah, आपको ये effort लगाना होगा, बल्कि you should do it. And you should do it as early as possible. You shouldn't wait कि मैं graduate हो जाऊंगा and then I'll start doing it. I would say you have an interest in your subject area, you found your subject area, immediately start reading up on, अगर आपने industrial उसमें जाना है, research में जाना है, immediately try to find like the top 10 companies working in that area. So you should like know this top of your head. My area is A. In A, these 10 companies are like the best. Why are they the best? Your reasoning behind it. क्योंकि वो इस technology पे काम कर रही हैं, या उनका futuristic scope है, या they are making good money out of what they're doing, what they're selling, या you like some concept which they're working on. So it has to be something जिसके ऊपर आप latch on कर सको, because वो आपको internally drive करेगा to be with that company. कल को अगर आप किसी contract में जाते हैं, you would know so much about that company that it will just come out of you.
जब आप इंटरव्यू में जाते हो या किसी से बात करते हो कि नहीं आई नो दिस इज द कंपनी फॉर मी व्हाई बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दिस इज और आपका स्टडी पैटर्न चेंज हो जाएगा योर स्टडीज विल काइंड ऑफ डाइवर्ट इनटू व्हाट दैट कंपनी इज डूइंग you kind of try to pivot yourself and say I really want to go to this company, what is it working on? It's working on these things, I want to do these things. I want to develop myself in these things. So in that sense you kind of start to focus area, but they can obviously you shouldn't focus on one company because then you're really closing, putting all your eggs in one basket wali baat hai. But having an area, जिस time आप telecom की जब हमने बात की थी 5G की बात की थी, somebody interested in 5G cloud for example, there are like 10 companies straight top of the head, Mavinar hai or there are a couple of companies जो कि नहीं आ रही हैं. You simply kind of like study them to see what are they doing, and based on what आपकी जो understanding थी कि मैं ये करना चाह रही हूँ, does it hit that or not? So you have that list of companies, you have that understanding of what they're doing on. Now you have your field of interest and it matches, right? अब ये match up कर गया ना, then my way of approaching it is usually alumni में देखें कोई है वहाँ पे उन companies में, LinkedIn में approach करें and simply contact people. You might contact 10 people out of which one might reply back. No harm. Yeah, you're not wasting anything. You're just throwing bits around, bits and bytes फेंक रहे हैं आप. Let it be. A template बना के, I'm really interested in this company. I see you working on these things. This is what I'm also studying on. Any job offerings or anything I can discuss in my future with this company, things like that करके. दूसरा है कि then there are HR companies and whatnot जो आपको also introduce कर सकती हैं, करा सकती हैं in such companies. Events होते रहते हैं. That's why I'm saying start as early as you can. इसमें प्रॉब्लम्स वही आ जाती हैं of course वो visas and all that kind of stuff. There's like so many things in between. लेकिन आजकल का these days the hybrid working models and remote working and all this is making things easier. So again, if you are somebody fresh out of university, you know the company, you know what they're working on, it is your interest to work with those things and you have actually invested time in those things. आपका final year project, let's say, suppose उस चीज में interest उसी चीज के अंदर है, so that will definitely facilitate you going further in that area. But I feel सबसे important चीज networking है. Go for networking, identify your companies, get out there and get out there early. Don't wait. Okay, thank you so much. Pleasure. Usra, you have a question? You wanna go ahead, like really fast? You can. Yes. I'll just mention my question very fast. Vasik, you just mentioned about managerial side research. Can you give a few topics or few dimensions, like just to elaborate it? What does it mean? Yeah. So I'll stay with the computer science domain. So computer science domain may when let's talk about agile, for example. So you have safe model, you have less model. So depending on the kind of industry, kind of enterprise, Conway law hai. Conway law jo hai wo so it's a famous how the design of a product will change based on the organizational structure of that company. How the organization communicates within that company. So Conway law. So personally, for example, this is the area where you say, okay, what is the ideal structure that a certain company a software company can set up so that the design that comes out from that company reflects what that company wants to have in the first place. I'm sorry, it's a words, it's a mouthful. लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब ये current research है जिसमें मैं खुद इस वक्त काम कर रहा हूँ. Just to give you an example, so I'm an architect, yeah, I'm not a manager. But what I'm saying is you want a certain type of architecture for your product. You want a certain design for your product. Okay, that has been decided by the company. But now how do we achieve it? In order to achieve it, आपके पास agile की methodology है. Fine, you take that. उसमें आपके पास safe आ जाता है, Spotify का model है, आपके पास less model है, there are many other models which you can apply. So now based on, and we have approximately 200, 300 developers. Okay? So you have a big conglomerate of a company and has many sites. So this is where the managerial thing comes, because first of all, you need to understand कि as a software developer, architecture है क्या? What kind of architecture would you want to have? What kind of design do you want to develop? Once you understand that, you say, okay, I have 400 people. I want that kind of design. So what would I do to achieve it? ये थोड़ा सा वो मैनेजरियल में चला जाता है. And I'm staying close to computer sciences. अगर इसमें आप इसको expand कर लें तो इसमें definitely there is many aspects. अब leadership model क्या हो सकता है hybrid के अंदर, communication model क्या होना चाहिए with developers so that design जो है उसको अच्छी तरह आप exchange कर सकें. देखिए realistically अगर आप market में जाएंगे ना, time to market is the most important thing. Software development में time to market. So when you have 300, 400 people working on a product,
ये जो communication overhead होता है ना, that kills you. It is really a problem. So उसमें how do you efficiently use your resources to design that product जिसका architecture आपने बनाया है as an architect? So that's kind of research. उसमें फिर then you are engaging on all those factors I mentioned. So आपकी collaboration है, communication है, design itself है, या आपकी फिर I haven't mentioned the feature pipeline. ठीक है, आपके features जो हैं उसके customers हैं, customers जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि जी we want this, this, this in the next release. So you're constantly reviewing those customer requests against your own architecture जो आपने बनाना है, against the hundreds of people जो आपकी development करेंगे, and then you have to somehow make sure that this actually gets done in a certain amount of time, because of time to market, as I said, is critical. So research elements, and why I say research here is because there is nothing else. I mean, there is no developed model जो आप simply लेंगे and apply कर देंगे, and you'll say, well, I have this model, apply it and it will work. It will never work. You always have to tweak left, right, a little bit here and there. And once you tweak it, that's when the optimum thing comes. But then what is optimal? वो भी आपकी human definition of optimal. And that keeps changing. So customers ज़्यादा हो जाएगा. If you have more customers, the demands will increase. When the demands will increase, your design will get affected quicker. So you have to manage that speed of delivery, and so on and so on. So you keep changing, adapting based on that. So this is what I was saying जब आप research में जाते हैं, you might start off as an architect or as a developer, and you might get moved into something like this जहाँ पे you do a different type of study. Yeah. Okay, thank you so So, much. I got it. Most welcome. thank you so much, Vasik. Thank you for being here. Industry side से review was very helpful because हमारा जितना भी research का focus होता है, हम लोग नहीं इतनी industry पे focus नहीं करते. But thank you for introducing this side of research as well. Thank you. My pleasure. All the best. Take care. Okay, thank you so much. And Munir, thank you for being here. How are you? Thank you so much. It's my great pleasure to be among you today, and I'm sorry that the microphone didn't work at the beginning. Oh, completely understandable. It happens with us as well. And the reason why we invited you is because we wanted to have a perspective, because all of this was very technical and, related to computer science, technology, innovation. But apart from that, there's also a side कि जब हम writing कर रहे होते हैं, writing is the most difficult part, especially for Pakistani students. We know what we have done, but how to write it down, that's the most difficult part. कि उसको like how to actually how to explain what we have done. या फिर for example अगर हमारा art side पे हैं हम, so how to write that down, how to explain, do the research in that area. For that we invited you. Thank you for being here. We would love to hear the perspective in terms of writing, creation, innovation in that terms. So thank you for being here. Thank you so much for inviting me. I have been following you guys since you were founded, and I think you must be really proud of how far you have come. What you have been doing is really amazing. And again, thank you so much for involving me. So I am actually on a very different part of research. And right now I'm not doing actively research, but I'm using a lot of research to create products and to create educational materials. And my goal in my business, my major goal is to make information and education more easily and equally available to everyone. So that is my driving force. I'm going to build on what the speaker before me mentioned. He told you focus on what you need, focus on what you want and your own interests and how you can contribute. And I'm going to take it from there, and I'm going to expand it a little bit beyond the individual. And I want to show you sort of like a different aspect of things. So I'm not, you can still ask me questions about the writing part. I'm not going to focus too much on writing, but I'm going to focus on more on the institutional aspects. And it's going to be relatively short because I don't want to take all your time. So here we go. Thank you.
Sorry, I cannot. I'm sharing in a second. Yeah, that's completely fine. We understand. And Ma'am Aisha, thank you for your patience. Are you feeling well? Are you okay? Me? Sorry, Yeah, you've been studying for quite a time. So are you okay? Everything fine? I'm not okay because of the match. Okay, that's understandable. I'm just like looking at, and Pakistan just lost, so that's why.